वेल, प्रशांत दामले यांचं एक प्रसिद्ध गाणं आहे. मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? माहिती आहे का सगळ्यांना? हो. त्याची पुढची ओळ आहे की काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं. आता हे गाणं तसं जुनं आहे, पण म्युच्युअल फंड सही आहे हे जरा नंतर आलं. आता जरा जर विचार केला तर हे गाणं म्युच्युअल फंडसाठीच लिहिलं गेलं आहे की काय, असं मला वाटतं. बघा ना तुम्ही, मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? काय पुण्य असलं की ते घर बसल्या मिळतं. सो माहीत नाही, पण मला असं सहज आपलं वाटून गेलं. अँड मार्केट्स आर ॲट एन ऑल टाइम हाय. इन्वेस्टर्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड. कन्फ्यूजन का आलम यह है कि किसी का शोर शांत बैठा है और किसी की खामोशी चिल्ला रही है. And at this juncture, it will be very interesting to listen to an important topic of markets, the way forward. And I would request Snehal Patwardhan to first please introduce our speaker, Mr. Ravi Gopalakrishnan. A very good evening to all of you. It's my great honor to introduce you, Ravi sir. Born and brought up in Mumbai, Ravi sir was commerce student. Since he was fascinated with the stock market during his college days, he opted for pursuing MBA and MS in finance from US. With the globalization, the potential growth opportunities in Indian equity markets and his love for Indian equity encouraged him to quit his well-paying job in US and he moved back to India. Ravi sir likes to call himself as a research person. As he spends most of the time analyzing companies, he hunts for mispriced companies, securities in the market, talks to company management regularly. Prior to Sundaram AMC, Ravi sir has worked with Principal AMC, Principal Asset Management Company, Canara Robeco Mutual Funds, PGIM Mutual Fund, Hudson Fairfax Group USA, and the list goes on. He adopts a strong bottom-up approach to investing and has an excellent track record of successful performance across firms and business cycles. This is his professional introduction. पण एक उच्चपदस्थ अधिकारी किंवा एक प्रतिष्ठित व्यक्ती म्हणून ते त्यांच्या पर्सनल आयुष्यात किंवा फ्री टाईममध्ये काय करत असतील याची एक मला उत्सुकता होती, म्हणून मी एक छोटासा रिसर्च केला त्यांच्याबद्दल. सो ही लाईक्स टू प्ले फुटबॉल अँड स्क्वॅश अँड ही हॅज रिसेंटली पिक्ड अप taekwondo. So he feels sports is entertaining and keeps him healthy. So let's welcome a fund manager who come back to Swadesh for his love for Indian equities. Ravi sir. Thank you so much. Yeah, can we have a big round of applause for Mr. Ravi Gopalakrishnan, please? Good evening, everybody. I think I should keep my mic a little closer. आवाज़ आ रही है पीछे? Very good, excellent. मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए मैम ने बहुत अच्छा बोला कि हेल्थ, एवरीबडी शुड बी इन्वेस्टिंग इन हेल्थ, राइट? तो ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, और ये भी मुझे बाद में ही पता चला इन्वेस्टमेंट्स की तरह, लेट रियलाइजेशन कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए. फिर स्वरूप ने बताया कि इंश्योरेंस है वो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट हैव इंश्योरेंस. बट आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच people really neglect. So I try to do my little bit in terms of health, etc., etc. But today's topic is not about health. It is about, I don't want many people of you to feel guilty कि पेट निकल आया है, मोटे हो गए, you know, all that. मुझे वो सब नहीं करना है अभी यहाँ पे. आप खुद जाके घर पे जाके मिरर में देख लीजिए, then you'll know. So, let's talk about India's long-term story. Actually, मुझे देखना है कि यहाँ पे कितने long-term investors हैं. When I say long-term, say 3 years plus. एक ही? Sorry. Oh yeah, quite a few long-term investors. Balcony में भी बैठे हैं, but वो light face पे आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है. But you know, अगर आप long-term है तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. अब मस्त डिनर विनर कीजिए
आराम से मस्त स्टोरी सुनिए और घर जाइए. Spend time with family, honestly, right? अब ये शॉर्ट टर्म वाले का जो है, I will talk about in a bit, but let's quickly go कि लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है. Geopolitics, India has done an excellent job. I'm going to run very quickly into some of these things. कि मतलब इतना disruptive, like पिछले 30 साल से, I don't know कितने लोग ने ये बुक पढ़ा है, वर्ल्ड इज फ्लैट. ये बुक ऐसा है कि पूरा वर्ल्ड अपने साथ बिजनेस करना चाहता है, एंड यू नो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू बिजनेस विथ ईच अदर. सो बट टुडे इन द लास्ट आफ्टर कोविड दैट एंटायर थिंग इज चेंज. सब लोग अपने अंदर देख रहे हैं. यूएस इज बिकमिंग मोर इनवर्ड, चाइना इज डूइंग समथिंग, रशिया इज डूइंग समथिंग. मतलब वर्ल्ड इज स्प्लिट, इट इज नॉट गेटिंग टुगेदर. तो काफ़ी डिसरप्टिव एनवायरनमेंट हो गया है. यू नो इट्स वेरी वेरी रिस्की फॉर द ग्लोब, एंड आई हैव नो क्रिस्टल बॉल कि मैं आगे 10 साल तक क्या, यू नो हाउ दिस इज ऑल गोइंग टू शेप अप. बट दिस इज समथिंग विच रियली वरीज मी, द वे द वर्ल्ड इज शेपिंग अप. One big thing about India is the bond inclusion. I will just have one slide on that. कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, because after many many years India has been actually accepted into the world economy, and this is the true proof of all of that. Growth is picking, आपको सब पता है. Inflation is under control, and hopefully over the next 12 to 18 months inflation थोड़ा नीचे. मैंने इन्फ्लेशन के बारे में क्यों बोला, इसके लिए कि सिंपल है. जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाता है. इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट नीचे आता है. आप 30 इयर्स का या 50 साल का चार्ट देख लीजिए, ग्लोबल चार्ट्स देख लीजिए. तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है. हमारा कोई यूज नहीं है ये सब प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग. आपको सिर्फ आके देखना है कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पर है. अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो अब समझ लीजिए कि वो नीचे जाने वाला है, राइट? अगर वो नीचे जाने वाला है तो आपको पता है कि इक्विटीज इज गोइंग टू गो अप एंड वाइस वर्सा. बॉन्ड्स के बारे में बताता हूं, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम $25 बिलियन ऑफ इनफ्लो इनटू द डेट मार्केट, आज तक कभी हुआ ही नहीं. आप अगर देखेंगे अपना जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल. ये देखिए कितना छोटा है कंपेयर टू सम ऑफ द अदर डेट दैट इज ओन्ड. इंडिया इज इन द सेकंड प्लेस. एंड इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि दिस इज एक्चुअली 10 times द एनुअल एवरेज एफआई डेट इनफ्लो. हम लोग अभी सारे इक्विटी के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्विटी इनफ्लो इतना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऑल दैट. डेट में तो कुछ आया ही नहीं अभी तक. सो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ डेटा जहां पे इंडिया का 2 पिलर है एक्चुअली, सिंपलिस्टिकली पुट. एक कंजम्पशन है और दूसरा इन्वेस्टमेंट है. इस वजह से क्या होता है कि ये जो नंबर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. वी स्पोक अबाउट डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग. स्वरूप ने अभी बताया कि कितना स्पेंडिंग होने वाला है ऑन मोबाइल फोन्स एंड कार्स एंड ऑल. आई हैव सम चार्ट्स देयर, सम इंटरेस्टिंग चार्ट्स व्हिच आई विल शेयर विथ यू. लेकिन इंडिया इज सेट टू अकाउंट फॉर 22% ऑफ द इंक्रीमेंटल वर्किंग एज पॉपुलेशन. इसका मतलब है 1 in 5 person going into the working age in the whole world is an Indian. We don't have to be proud because our population is also that high. So I don't think we should take credit for that. But whatever it is, we are blessed with that, right? एक कहीं तो काम आया ये population. And our middle class is also fairly large. Again, same reason. आगे चल के बताऊंगा कि why this is important. Urbanization, ये जो छोटे टाउन्स है, विलेजेस है, जो चेंज हो रहा है, अर्बन बन रहा है, राइट? दैट इज ऑल्सो changing in India, but we are still much below the world average. World average is 56%. We are at 35%. So still a very long way to go. जब urban होता है तो आपको infrastructure करना पड़ता है, railways, everything, right? Buildings, real estate. It is a big tailwind for some of these investments. ये तो सबने देखा हुआ है, ये जो middle class and aspirers and all of that, I think
Siddharth spoke about it. Swaroop also touched about it. Let's talk about some of the consumption growth engines as to why this is so robust. The first pillar I spoke about. दो pillar है, consumption एक है, investment एक. Now these are the basic themes. अगर आप इसको closely study करें, rural ले लीजिए. वहाँ पर आगे आपका हाउसिंग, रूरल हाउसिंग, थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स, इरिगेशन, वेयरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस. अर्बनाइजेशन में आपका आ गया हाउसिंग अगेन, एनर्जी, हेल्थ, सैनिटेशन, सस्टेनेबिलिटी, ई कॉमर्स, राइट. एंड ये सबके बीच में जो बैठा हुआ है फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल इंडिया, राइट, विच इज एक्चुअली टेकिंग द एंटायर जनरेशन, स्वामिंग द एंटायर जनरेशन. एंड there is this middle class, very strong middle class. जहाँ पे again, consumer durables, lifestyle, education. Swaroop talked a lot about lifestyle changes and how that is going to impact our wallet. And finally, the rich becoming richer and hence premiumization, leisure, यहाँ पर spending होने वाला है. So let's drive a little deeper into this. ये consumer discretionary है. Discretionary consumer is nothing other than जो FMCG है, जो हमारा everyday life का soap, detergent वो नहीं, but all your others like automobiles, mobile phones, etc., etc. That has changed dramatically. जो dark blue box है, वो 13% हुआ करता था out of 87, out of 100%. आज जाके हो गया है 1/3 of the spending today. In 2030, it is expected to go to almost 1/3 of our total spending. This is the entire population. And India has got a lot of catch-up to do. If you see in the AC market, for example, I won't go through all the thing, but just take a look at the AC market, where India is, green is China, blue is US, dark blue is US. अपना जो penetration है अभी भी बहुत बहुत low है. So there is like a lot of potential in the AC, washing machine, refrigerator, TV, where India is still very, very under-penetrated. अब कल जाके आप इनका shares मत खरीद लीजिए, please. This is not a subject. क्योंकि ये काफ़ी long term में होने वाला है, 10-15 साल. यहाँ पे काफ़ी long term investors है वैसे. Okay, retail opportunity. This is something which really excites me a lot because it's a huge opportunity. I think Swaroop also spoke about it. घर पे बैठे बैठे Zepto आ गया घर में, right? The retail market itself roughly 3 times जो light blue है in the next 5 years, 3x. But see the e-commerce opportunity. It's almost 7 times. The dark blue circle is going to go up by almost 7 times. A very, very exciting and a new space. And I think that will grow quite significantly. Okay, let's focus on the per capita GDP. ये क्यों interesting है? क्योंकि आज India जो है is at the same place where China was in 2005, and I'll give you an example there. Roughly $2,500 approximately per capita. Why this number is important? Because here's the Chinese example. आप ये देख लीजिए. 2005 में चाइना का भी जीडीपी इतना ही था. And there were like 15 cars for China, 16 cars when their GDP was $2,000 per 1,000 people, 16 cars. Today, their GDP per capita is in excess of 12,000 or 13,000. वो बन गया है 115, मतलब 15 गाड़ी से 115 गाड़ी हो. India is exactly where China was in 2005 with 13 cars. अब आप अंदाजा लगा दीजिए ये 13 कहाँ पर जा रहा है. Of course, China grew very, very rapidly. I don't think India will grow at that pace. But even if India reaches 70 or 80, that is still a very, very good growth. Similarly, South Korea का भी यही example है, similar example. Refrigerator market, again, Indonesia का example है यहाँ पर. 25 has become 73 over a period of 15 years.
right? Today, India is only 34% owning refrigerators. It's a very low number. Okay, so coming to the second pillar, which is investment. ये जो pillar है वो 10 साल के बाद जागा हुआ है. Actually, for last 10 years, we have not seen any investment in India. There were very lot of reasons. मैं उस पर जाना नहीं चाहता, but let's see what's happening. अब investment के basis पे आप देखेंगे तो क्या बनता है इसमें? Manufacturing, banking, finance, capital goods, industrials, infrastructure and construction. For an economy to grow at 8, 9, 10%, you will need both consumption and investments to actually go hand in hand. अब तक क्या हो रहा था? पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट चल रहा था, उसके बाद 10 साल के लिए सिर्फ कंजम्पशन चला. अब टाइम आ रहा है कि दोनों ही इंजन फायर कर रहे हैं. सो वी आर सिटिंग ऑन अ फैंटास्टिक पोजिशनिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो दैट इज व्हाई आई सेड, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, this could be the best decade. Siddharth mentioned about the best decade that's right in front of us. So we are right here. Just look at this chart, an early upcycle. अभी बहुत टाइम बाकी है, अगला 10 साल. एंड स्टॉक मार्केट तो इकोनॉमी का स्लेव है. जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ता है, स्टॉक मार्केट उसके पीछे पीछे चलता है. इसमें कोई मैजिक नहीं है. Okay, why are we saying that investments is looking so good today? Because this is the banking restructuring that bank ka NPA, which is the health of the Indian banking system, non-performing assets जो है, जो काफी बढ़ चुका था in FY 15, 16, 17, it was very, very high. It's gradually coming down, and that is the reason banks are become much more stronger today. They are able to lend money more freely, especially the PSU banks. ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि कॉर्पोरेट इंडिया जो है एकदम ही डीलेवर्ड हो गया है. डीलेवर्ड मीन्स उनका जो बैलेंस शीट है, द बोरोइंग कैपेसिटी हैज गॉन अप ट्रेमेंडसली बिकॉज दे हैव रीपेड अ लॉट ऑफ लोन्स विद द कैश दैट दे हैव अर्न्ड. तो मतलब कॉर्पोरेट इंडिया बहुत हेल्थी हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर कैपेक्स साइकिल, जो कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना है, दैट इज गोइंग टू गो अप इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. सो व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स? मैन्युफैक्चरिंग अगर आप लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर जीडीपी ग्रोथ. मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जीडीपी ग्रोथ. जो मैंने बताया कि पिछले 10 साल से एकदम लैगार्ड हो चुका था. देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग वाज almost negligible, right? India still lagged very, very low compared to a China or Vietnam. We are just at 15% of total GDP manufacturing. एक ज़माने में ये काफ़ी हाई हुआ करता था, but now it has fallen quite a bit. But so we have a lot of catch up to do, and I think with Atmanirbhar Bharat, PLI, and all of those initiatives, manufacturing is slowly coming back. What are the areas of manufacturing? I'm just giving you some little bit of example. If you see the capex cycle revival, oftentimes आप economic times पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आता होगा कि capex cycle is reviving. ये क्या चीज़ है capex cycle, right? Capex cycle is nothing but जो state invest करता है या government, central government invest करता है and private sector invest करता है. अब center और state तो invest करते ही रहा है continuously. So if you see this orange and blue line, you know, it is constantly going up. But private sector is something which is, you know, was a big laggard for so many years. क्योंकि business confidence नहीं था, demand नहीं थी, so many other things. अब जाके वो change हो रहा है. And we are increasing the private sector capex cycle. It is improving as we move on. ये एग्जाम्पल है दो. यू नो, आई होप यू कैन सी दिस स्लाइड. ऊपर वाला साउथ कोरिया है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली इज ड्राइविंग द जीडीपी. अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो कुछ नहीं है. और चाइना, आपको सब पता होगा कि चाइना इज स्लोली स्लोइंग डाउन, राइट? मैन्युफैक्चरिंग इज स्लोइंग डाउन. सो दैट इज द रीजन देयर जीडीपी इज ऑल्सो गोइंग डाउन.
So manufacturing for the health of the economy is very, very important. While हम लोग सब बोल रहे हैं कि इंडिया एक सर्विसेज रिलेटेड इकोनॉमी हो चुका है, बट यू कैन नॉट इग्नोर मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट इज सच अ बिग पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी. Let's take a few examples, of what manufacturing, how big this can become. हमको तो देखना है ना कि अगले 10 साल में कितना बड़ा हो सकता है ये. Electronic manufacturing, let's say for example, we were nothing. 10 years ago, we were nothing. But today you see, slowly, it is improving and quite dramatically. A lot of companies like Apple, Samsung, they all want to set up manufacturing capacity in India. And that is the reason you're seeing a massive growth here. And India's share, look at that pie chart उधर last में. India's share जो है, and that is by 2026 estimate, India's share was 2% in 2021. That is expected to grow to 7% by 2026. That's the kind of rapid change that we are seeing in manufacturing. Similarly, energy. Clean energy, India has taken a very important lead in clean energy. ये जो pink bars है, वो सारा हमारा जो next 10 साल या 5 से 10 साल का जो power capacity में addition होगा, वो green energy से होने वाला है. While thermal energies will continue to go, but it is this renewable energy which is going to add to the capacity significantly. So these are very important macro trends that as investors we need to see. So, ये तो सब अच्छी बातें हो गई इंडिया की 5-10 years story, right? What is the market factoring? Is the market factoring these things ahead of time? And हमेशा होता है ये. Market हमेशा आगे चलता है in anticipation of good things. Hence, we believe that the near term is looking a little cautious. अब बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ. So, some of these charts we need to keep understanding, and that's where Swarup's point about asset allocation becomes extremely important. कि आप अपना asset allocation देखिए. Is it balanced? Has the balance suddenly changed? For example, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे 50% इक्विटी चाहिए, बाकी सब रियल एस्टेट, गोल्ड, डेट, ये सब चलेगा मुझे. अब वो 50 का बढ़ के हो गया 70 क्योंकि मार्केट ने आपको रिवॉर्ड कर दिया. तो आपको कुछ करना है कि नहीं? You have to do something. I'm not saying you exit the market and then go 1 or 0. ये 1 or 0 का गेम नहीं है. ये सिर्फ धीरे धीरे बैलेंस करना है आपको. You just have to balance it at appropriate times. And some of these charts are a great reminder. ये 1634 का chart है, where bubbles have been created. I'm not suggesting that we are in a bubble right now, but this acts as a reminder. History is a great reminder of things. 1929 का सबसे बड़ा crash, and after Black Monday 1987, इसके बाद global financial crisis, etc. Right? जहाँ पे this is the Nikkei bubble and .com bubble, जो हमने देखा है 2000 में, right? जो asset class ऊपर जाता है consistently for over 2, 3, 4 years, eventually, that is unsustainable. उसको नीचे आना ही है. History may not repeat, but it does rhyme. Repeat तो होता नहीं है exactly same, but मोटा मोटा वैसे ही चलता है. And why do we say that? Now look at the retail activity. This really bothers me. This really worries me a lot. अगर आप average market volume देखेंगे, right? ये जो last on this table, FI volume has fallen from, this is Q1 of FY23, CY23, calendar year 23. 16% से 12% हो गया FI का activity level. Domestic institutions का भी कम हो गया है relative basis पे. किसका शेयर बढ़ गया? रिटेल 73 का 79. रोज जो इन आउट होते हैं वो probably, right? और so the share of retail, and this is where I think we need to exercise some bit of caution कि ये थोड़ा सा normal नहीं लग रहा है.
आई एम नॉट सजेस्टिंग कि कुछ क्रैश होने वाला है, कुछ मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली, बट रीज़न कहीं से भी आ सकता है, राइट? हम लोग वैल्यूएशंस पे जाएंगे 2 मिनट के लिए. एंड लुक एट द स्मॉल एंड मिड कैप एक्टिविटी. ये होता है. मैंने अपने 30 इयर्स के करियर में एटलीस्ट 5 बुल मार्केट्स एंड 5 बेयर मार्केट्स हैव सीन, और ये हर बुल मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप का एक्टिविटी बढ़ जाता है. ये नेचुरल है. Nobody can do anything. But you see, FY22 small and mid cap was just 16% of the total activity. Today it is 46%. मतलब रुपया में 8 आना small and mid cap में जा रहा है. Something to keep in mind. और ये है PE valuation जो आप सब लोग जानते हैं, you know, everybody in this room knows that, and this is a chart from FY13. We are almost at the top in terms of the mid-cap PE and even for the small-cap PE. The left is mid-cap PE and right is small-cap PE. If I do a reverse of that, this is a very interesting chart, you know, just to make things very, ये जो है yield है on the mid-cap, small-cap and micro-cap का yield, तो उल्टा, PE का उल्टा. जब ये यील्ड ऊपर होता है तो अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है, राइट? विच मीन्स द शेयर प्राइस इज एट द बॉटम. अब शेयर प्राइस हाई है तो आपका यील्ड तो नीचे चला गया. आप यील्ड के बेसिस में देखेंगे तो यील्ड है ही नहीं अभी. सो विच मीन्स देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सिमिलरली लेट्स जॉइन सम फंडामेंटल्स. अभी तक तो हमने प्राइस के बारे में बात किया कि प्राइस बढ़ चुका है, वैल्यूएशन बढ़ चुका है. लेट अस लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मिड कैप कंपनीज. ठीक है ना? ये जो ग्रे है बॉक्सेस ऊपर का चार्ट में वो है लार्ज कैप, जो ब्लू है वो मिड कैप है और जो येलो है स्मॉल कैप. तो द शेयर ऑफ अर्निंग्स फॉर NSE 500 आप देखेंगे तो धीरे धीरे मिड कैप का कम होते जा रहा है, फ्रॉम 19, 20, 18 टू अबाउट 17 नाउ, विच मीन्स व्हाट? द इंटेंसिटी एट विच mid-cap companies were making profit, it is going down compared to large caps. इसका मतलब यह है कि large cap का profitability थोड़ा सा better, growth wise better दिख रहा है at this point in time. But market capitalization उल्टा हो गया. अब ये देखें NSE 500 का mid cap का जो market cap है वो 17 से जाके 20 हो गया. Contribution to the total market cap. So fundamentally आपका numbers थोड़ा सा कम होते दिख रहा है और प्राइसेस आगे बढ़ चुका है ऑलरेडी. अब ये तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस. दिस इज द डेरिवेटिव कैश वॉल्यूम रेशियो. इट इज 400 टाइम्स द नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन. मतलब डेरिवेटिव मार्केट में तो जो चल रहा है इट इज लाइक अनबिलीवेबल. इट इज 400x. नोवेयर इन द वर्ल्ड दिस वॉल्यूम हैज बीन सीन. सो मतलब इंट्राडे हो सकता है, 1 वीक का जो सेटलमेंट है वो हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग, मल्टीपल रीजंस, which means a lot of people have already come into the market. Let us talk about PSUs, right? Overall, PSUs में भी काफी कुछ दिख रहा है. Activity, you know, some of the share prices have gone up like 300%, 3x, 4x. But there is we sat and analyzed some of these companies. कुछ देखे हमने कि ये shares क्यों बढ़ रहे हैं इतने. The main reason is liquidity. ये जो चार्ट में है, ये जो प्राइसेस जो PSUs के चल रहे हैं उसके फ्री फ्लोट एकदम ही कम है, 4%, 5%, बाकी सब गवर्नमेंट के पास है. लेकिन शेयर प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि फ्लोट ही नहीं है. थोड़ा सा पैसा में, एंड ऑफ कोर्स यू नो पीपल इन्वेस्टिंग इन पैसिव्स. पैसिव जब आ गया है, पैसिव तो हर एक शेयर खरीदता है उसमें. पैसिव डोंट सी कि ये शेयर महंगा है या ये सस्ता है, right? They have to buy everything. So that is what is causing this, you know, aberration in some of the PSU stocks. I wouldn't say every PSU stock, but certainly in some of the low liquid PSU stocks, you're seeing a lot of activity primarily because of low liquidity. Liquidity बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा पैसे में कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है तो वो शेयर प्राइस भाग जाता है. That is exactly what is happening. Okay, and let us look at
you know the history again, right? ये पूरा पैटर्न है एक्चुअली, बहुत ही सिंपल पैटर्न है. एवरी 3-4 years एक फैशन बदलता है. Equities do well, few years debt will do well, few years gold will do well. अगर आप देखेंगे 2010-11 या 12-13-14, you know, these were good years for our equities. Very good returns, some barring 15-16, some moderation, but by and large the other asset classes were not doing too well. Whether it is gold, debt, again, you know, after that period you saw a long period of underperformance compared to the other asset classes. I'm not saying positive or negative return, but just compared to the other asset classes, compared to gold and G-Sec. And then अब फिर से शुरू हो गया. So 3-4 साल में ये हमेशा होते दिखता है कि equities will do well. तो इसी वजह से तो मतलब अपना रिटर्न जो है 13-14% एवरेज है. बिकॉज देर आर सम ईयर्स जहाँ पे 25-30% भी मिलता है. देर आर सम ईयर्स जहाँ पे 5-6% रिटर्न पे आ जाता है. सो ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट. एंड आई थिंक all of you should spend maximum amount of time not trying to find out कि बाजार अब कहाँ जा रहा है. इसका आंसर किसी के पास नहीं है. आपको लगता है कि हम लोग तीनों मिलके भी अगर बैठ के डिसाइड करें कहाँ जा रहे हैं, हमको नहीं पता है. We have no idea. So the only way you can save yourself is to do proper asset allocation. कि जहाँ भी दिखता है कि prices बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, take some money off the table, move it to a different asset class. और within equity आप ये भी कर सकते हैं. आप देखें ये large cap, mid cap, small cap का. I'm sure this was a question that will come, but I've already addressed it because you see how large caps have outperformed in certain phases, right? अब 2020 से लेके the first line is small cap, the second line is mid cap, and the third line is large cap. Every single year from 2020 except 22, mid and small caps have actually outperformed significantly. Significant amount of the returns have already been done. Large caps have also done well, but in comparison, nothing. History पे जाएं तो same thing. Whenever there is underperformance of a particular asset class, आप उस पर ध्यान दें. Don't try and catch, you know, the next flying asset class which has already gone up quite a bit. So ये important है. So not only within the asset classes के आपको डेट बढ़ाना है, इक्विटी कम करना है, इक्विटी बढ़ाना है, डेट कम करना है, all of that, but even within your large cap, mid cap and small cap exposure, you need to spend a lot of time. So ये ही एक काम है. Honestly, ये ही एक काम है. Siddharth was talking कि it doesn't matter which fund you are in. क्योंकि कोई फंड अच्छा कर रहा है 5 साल के लिए, कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है 5 साल के लिए. It doesn't matter in the long run. What actually matters is your asset allocation. अगर आप ये ठीक से कर पाओगे, so आपका जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल रहेगा. So finally, let me try and conclude here. Long-term prospects of the Indian economy is extremely robust, no doubt about that. Markets have given very strong returns in the last 2 years, perhaps discounting too much what is going to happen in the next 3 years or so. There is a big divergence between mid and small cap versus large cap, so you need to pay attention to that and focus on asset allocation. जाने से पहले मुझे एक story याद आ रहा है, which a great friend of mine actually, you know, he basically told me. It's not written in any book or anything like that, but it's a very funny story. He said that all of us are monkeys. Bandar. We are, by the way. But क्या होता है ना, एक पेड़ के ऊपर suddenly you see there are a few monkeys which are already sitting there. नीचे के लेवल पे बैठे हुए सब लोग ऐसे पकड़ के बैठे हुए. There are a few monkeys which are close to the tree कि मैं अब कब चढ़ूं इसके ऊपर, right? क्योंकि नीचे का फ्रूट तो खत्म हो गया, अभी ऊपर है, अब चढ़ना है तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा, right? And then there are bunch of this thing, नहीं यार अभी ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये है वो है, मुझे अभी नहीं चढ़ना, ठीक है?
अब वो फ्रूट धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है. अब ये लास्ट वाला मंकी को लग रहा है मेरा तो मिस हो गया, अभी चढ़ता हूं मैं, अभी चलो. चढ़ गया बेचारा ऊपर एकदम टॉप पे, राइट. और ऊपर जाके बैठ गया, बड़ा खुश हो रहा है कि थिंग्स आर डूइंग वेरी वेल, मार्केट अच्छा कर रहा है, राइट. इन आवर टर्मिनोलॉजी मार्केट्स आर वेरी गुड. चढ़ा लास्ट में, बंच ऑफ द. नाउ देयर इज अ स्टॉर्म, हवा चल रही है, धीरे 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 हवा चल रही है. अब वो हवा में which is the monkey which is going to be the most scared? The one on the top. क्यों? क्योंकि ऊपर ज्यादा. अब वो क्या करता है? सडनली उतर के भाग के नीचे आ जाता है. ये जो नीचे बैठा है वो तो बैठा ही है. नीचे वाला का नाम है SIP. ये जो ऊपर है इन आउट करता है, राइट. Warren Buffett's chart that was, right? The 10 days, the 5 days, the best 5 days, the best 10 days सब यहीं पर है. फिर उठ के दूर बैठता है क्योंकि स्टॉर्म है, अभी मैं नहीं जाऊंगा अभी उसके अंदर. स्टॉर्म में तो सस्ता मिलता है. So this monkey story is what I want to just remember. बाकी सब आप छोड़ दीजिए, सबको मिल जाएगा, आपको गूगल में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा. Please remember the monkey story. Thank you very much. Felicitation. So much, sir. So wonderful, again, great valued addition. And I would now request Mr. Bhushan Mahajan, Ajay Ladha, and Suhas Akole to please come on stage and felicitate Mr. Ravi Gopalakrishnan. So friends, just give me 1 or 2 minutes for the concluding remarks. Just have a round of applause, please. So मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो कि आज आपने जो भी यहाँ पे अच्छी बातें सुनी, the value additions which you got, please share them up with at least 1 or 2 people so that हम लोग ये जो investor awareness की जोत जलाते हैं, ये इसी तरह से जोत जलाते चलो.